Get started. Okay. So, very good afternoon, everyone. So, as we are discussing about Unit 4, and in Unit 4, we have already discussed about IBD, that is the inflammatory bowel disease. We have also completed the another disease, that is jaundice, and today we are going to discuss about hepatitis. So, hepatitis we have discussed in last class, but again due to network problems, maybe somewhere some students didn't get it. So, hepatitis we are going to discuss today. So, this we have already discussed IBD, and I think someone is asking for admit. Okay, so we have discussed about different types of IBD and what are their etiology, what is epidemiology, and about the pathogenesis of inflammatory bowel disease. Diagnosis, what diagnostic test we are doing currently to diagnose the patients of IBD, and what kind of treatment we are giving for the IBD patients. Another things which we have discussed about bilirubin, so jaundice, and increase in bilirubin level when going to be do the yellow colorations of sclera, yellow coloration of mucous membrane. So that conditions we called a jaundice. And what are its etiologies? It's a hemolytic anemia, hepatitis, gallstone tumor. So it depends upon which type of jaundice the person is affecting. And as in jaundice, there is a increase in bilirubin level. So first you have to be understands how bilirubins are formed in the bodies, what is its source, and how it's been be excreted out. So these diagrams we have already discussed how in the lysis of red blood cells, then there is a heme, then there is a globin, and then how it bilirubin is produced, and then it converted into a unconjugated to conjugated form in the liver, and then it's goes to the biles and stores in the gallbladders, and from gallbladder it release and help in the digestions of food. So I think again someone is asking for admit. Slides are visible, right? So this we have already discussed about pathogenesis, and then we have discussed about the diagnosis. One thing which I forget to tell you about the diagnosis of jaundice, so if eye color, depending upon the symptoms in the patients. So if the eye color is yellow, so we can get a sense this is a jaundice of RBC. And if eye as well as urine colors becomes yellow, so you will get a sense this is the hepatic jaundice. This is a jaundice related to liver. And if eye and urine color is yellow and feces color or stool color is white, so you will get a sense there is a obstructions in the bile flow. The feces gets a yellow colors due to bilirubin. So if there is a obstructions in the bile flow, so definitely the patient's feces will becomes white, and eyes and urine colors become yellow. So these are the certain kind of symptoms from where you can get a sense which type of jaundice the person is suffering from. These already we have discussed: LFT, bilirubin, MRI, liver biopsy. Hepatitis. Today we are going to discuss about hepatitis. So if you remember, I told you when there is a word itis. Itis means inflammation. So in this case, itis, inflammations of what? Inflammations of hepatocytes, and hepatocytes the liver cells. So and alcohol also could result in the hepatitis. There is a certain
10 medications which are the major reason of hepatitis virus. There are the different types of hepatitis. There are mainly two categories depending upon the durations. So acute symptoms, someone is asking for something. Am I audible? Hello, Harshita, Abhishek, can you confirm? Yes, you are audible. Okay. Okay, thank you. So, depending upon the durations, we are categorizing into two types, acute and chronic. Acute means the disease of shorter duration. So, in this case, if the person have a hepatitis less than 6 months, so we consider it as a acute hepatitis. And if is inflammation is more than 6 months, that we consider that a chronic hepatitis. Etiology, as I told you, viral infections. But of course, apart from virus, there are another reasons also like excessive use of alcohol. Autoimmune means some antibodies has been generated in the bodies which do the destructions of liver cells. So that is also the one of the reasons. And as I told you, there are certain drugs which also could result in the inflammations of liver. That is the hepatitis. So different types of hepatitis. So mainly five types: A, B, C, D, E. So A and E hepatitis is particularly transmitted through a oral fecal route, and particularly it happened due to the consumptions of contaminated food and contaminated waters when we are drinking it. So these A and E, but whereas B, C are particularly these are transmitted through a contaminated blood, and when from mother to babies also it is transmitted. So these are the different types of hepatitis. As I told you, hepatitis A is a single strand RNA virus, and it mainly transmitted through a contaminated water and food, and particularly more cases we are observing in monsoon. And reason is, this one contaminated water and food is much more, particularly in monsoon seasons. Fecal-oral transmission is there, and but best thing is, means fortunately this kind of hepatitis is acute, means it will inflammation will be happen for a certain times, and after that it will be resolved, right? But hepatitis B, it's a single stranded DNA, and it mainly transmitted from mother to child, and it can convert into a chronic hepatitis. So, and if it's remain untreated, then it further results in the liver cirrhosis and also in the development of liver cancer, right? So hepatitis C is also single-stranded RNA virus, and it transmitted through needles, through saliva, sexual transmissions, through needles. People are using for various purposes, for tattoo purposes also people are using, and if someone is infected and using the same needle, so there is a high risk for the development of hepatitis C virus. And also it could result into a chronic hepatitis, right? So hepatitis B is particularly happens with hepatitis B, right? So it's a co-infections with hepatitis B, and if someone have a hepatitis B and along with hepatitis B is hepatitis D, so that persons will more susceptible to convert into a liver cirrhosis or liver cancer at faster rate as compared to the other persons. So this is about hepatitis D, and hepatitis E. As I told you, it's as that of hepatitis A. It's contaminated. It's transmitted through a contaminated water and food, and through a fecal route, and more cases in monsoons. And it's a acute, and with certain times it will be resolved. So these are the different types of hepatitis and pathogenesis of hepatitis. So so these particularly any virus which when enters in the bodies, it use our host machinery for the productions of proteins, for the productions of virions, and it makes a number of copies.
So that is applicable for all the viruses. Virus enters in the bodies, and it use our own cells machinery for the production of these. So you can see by these diagrams, these are the different processes for the entry of virus. It will attach, then it will uncoat and release its material, and then it act on the nucleus and do the transcription and translation of number of new proteins, and that proteins are required for the development of that virions or a new viral copies, and finally it will release into the bloodstreams. So this is for every virus. So with respect to hepatitis, what is actually the pathogenesis of hepatitis, pathogenesis and clinical findings? So from this figure, you can understand much more clearly about what actually the viral hepatitis pathogenesis is. And with respect to whether it is a hepatitis A, B, or C, or D, or E virus, it doesn't matter. The infections with virus which will target the liver, hepatocytes are invaded and damaged, and foreign particle and tissue damage activate the immune system. So whenever any pathogen enters in our bodies, our immune system sense that pathogens, because our immune cell have some sensor like receptors or not like receptors, and pathogen have a different kind of structures that will be called PAMP, pathogen associated molecular pattern. So these will be recognized by PRR, that we call pattern recognition receptors, and well-known examples of pattern recognition receptor is called like receptors, not like receptors. So it will sense, and after sensing, you all knows what will happen. So it's going to activate the MAP kinase, NF kappa B kinase pathways, and then do the productions of cytokines. In particular, in viral infections, interferons plays a major role. So when after means majorly the interferon are released, and interferons have an antiviral response. So this happens during the acute inflammations, and these are right upper quadrant pain, RUQ pain, right upper quadrant pain. Patients can complain, and rest patients can complain. And if infection is prolonged, then patients can get a fevers and can feel a nausea, or can get a vomiting also. So if virus is not cleared out from the body, so there is a lysis of hepatocytes are also happen. So during the lysis of hepatocytes, when liver cells are lysed, so there are a specific types of enzymes are released, and that we called a ALT and AST enzymes, SGOT, SGPT. So their level, when you will measure in a serum, you will find their level is increased. So if someone go for a blood test and their ALT, AST level of these enzymes is increased, so what does it indicate? It indicates there is a injury in the liver cells, right? And then if infections with chronic viruses, particularly as I told you, A and E viruses are going for acute. They will create a acute hepatitis, but of course, hepatitis B and hepatitis C virus persist for a longer durations, and it results in the inflammation for a longer duration. So these viruses persist over time, and additional symptom may develop. And particularly, liver plays a various role. It helps in the production of glucose. It helps in the productions of proteins like albumin. It helps in the productions of clotting factors. It helps in the secretions of this one bilirubins also. So all these functions will altered in chronic hepatitis. So in chronic hepatitis, in case of hepatitis B or C virus, these gluconeogenesis process which happens in the livers, you all are simultaneously reading biochemistry, so you know what actually the gluconeogenesis process in the liver. So ultimately, if gluconeogenesis process in the liver is reduced, ultimately serum glucose level will be decreased. And if serum glucose level will be decreased, the patients will complain of fatigue also. So another thing is decreasing the synthesis of plasma proteins, clotting factors. So if clotting factor is decreased, so what will happen? Your INR ratio will increase. INR is a international normalized ratio, and it depends upon the prothrombin time. And if someone's INR ratio is increased, what does it mean? It means the person's blood will take more time to clot, right? So normal clotting time is 10 to 13 seconds, right? So if
someone INR is much higher, so that person is a risk of bleeding also, right? So another thing is bilirubin. As you know, bilirubin is cleared from the blood and it converted from unconjugated to conjugated forms in the liver by glucuronidations. And the if liver function is disturbed, so automatically bilirubin levels will be increased, and it results in the formations of jaundice. So these all are the chronic hepatitis, and particularly also it results in a various symptoms like portal hypertension, encephalopathy, splenomegaly, increase in the spleen size, esophageal varices, ascites. So all these conditions it could result in. So that's why chronic hepatitis is also very difficult to treat. So when we are starting a medicines for a chronic hepatitis like hepatitis B and C virus, the treatment will be much more longer. You have to take the medicine for 10 years, 20 years, or maybe lifetime also in case of hepatitis B or C virus infections. But however, in case of A and E, your medicines, if means in most of cases medicines are not required. Inflammation will be resolved. But if medicines is required also, so that will be required for a shorter period of time, not for a longer period of durations, right? So this is about pathogenesis, about whether pathogenesis of hepatitis A, B, or C. It's a generalized pathogenesis, how virus enters and how immune systems activate, and then further, if it's remain untreated, it results from acute. It will convert from acute to chronic, right? Diagnosis, history is very important in every disease, and so you have to be asked the patients, particularly in hepatitis case. You can differentiate on the basis of history whether the person is suffering from hepatitis A, hepatitis A or E, or B or C. So if the if the patient is complaining that from means yesterday he or she took something from outside, or drink some water from the outside, and after that they are getting these things, these symptoms. So in that case you can easily sense this is the case of hepatitis A and E. And if the person is saying his or her mothers have a hepatitis, and then he also tested positive for a hepatitis, so obviously you will get a sense it's a hepatitis B. So history will help us to differentiate, and of course the symptoms are there. But if you see these symptoms are very generalized, and these symptoms are overlapping with other disease. Fever is happens in every viral infection. Fatigue is happens in various disease. Loss of appetite happens. Nausea, vomiting. So these are all are not very specific symptoms. So on the basis of these symptoms, it's very difficult to say the person is suffering from hepatitis. So of course, with the help of blood test, we can get to know whether the person have a hepatitis A infections, or hepatitis B, or hepatitis C, or D. So prevention and treatment, for hepatitis A and B, we have the vaccines available. Now, recently, we also have a vaccine for hepatitis E. But of course, availability of hepatitis E is somewhat less as compared to A and B. And with respect to A, B, and E, B hepatitis vaccine is available in our healthcare systems and available of free of cost. But hepatitis A vaccine is not included in these programs. The reason is hepatitis A, it's resulting into acute infection and due to contaminated food and water. So it's a by choice. If you want to take hepatitis A, you can take. If you don't want to take, it's okay. But of course, hepatitis B vaccination is very, very important. For every child, hepatitis B vaccines should be provided, right? And as I show you, hepatitis B remains untreated, how serious it is. It results in a liver cirrhosis also, and liver cancer also. So these vaccines are available for preventions, but of course, vaccines are not. We can't say it's 100%. These will provide the protection. Sometimes, means some few cases, these infections can be emerged, and in that case, after the infections, we have some
antiviral drugs by which we can suppress these virus, and particularly hepatitis B and C virus, we can suppress it. So for the suppression of these virus, we need the lifelong medications, particularly for B and C, right? And if the person liver condition is become worse, like liver cirrhosis or liver cancer, so in that case we can do the liver transplant also. Maybe many of you might thinking of, I told you yesterday also, maybe you people have heard or not. I just asked, you all have heard about kidney transplant, and the reason is we have a two kidneys. So okay, if someone's kidney is not working, so you can donate, your family member can donate one kidney, and the donor can survive on one kidney. But in case of livers, we have only one liver, we don't have a two liver. So if the person will donate the liver, so how that person will live without the liver, right? So this liver transplant, if you remember about anatomy and physiology, you will find there are two lobes, right and left lobe of livers, and particularly when we are doing the liver transplant, we are transplanting one lobe to the patients, and after transferring, the best quality of liver is regeneration. So it will regenerate, right? So it will regenerate. And but again, if someone liver is not functioning, or liver function test shows that its liver is not properly functioning, so in that case you can't transplant that liver, right? So this is about the hepatitis. If I will explain in a little bit in Hindi, so I will explain hepatitis. um, हेपेटाइटिस किस मीन्स, जैसे इसका नाम इंडिकेट करता है, आइटिस मैंने आपको बताया था, आइटिस किसी भी वर्ड के पीछे लगता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इस केस में इन्फ्लेमेशन किस चीज की है? हेपेटोसाइट्स की। और हेपेटोसाइट्स कहाँ पे होते हैं? लीवर में। तो लीवर के सेल्स की इन्फ्लेमेशन को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन कई कारणों से हो सकती है लीवर में, जरूरी नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन से ही हो, बट ऑफ कोर्स वायरस जो है वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ हेपेटाइटिस। बट एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, कुछ मेडिसिन की वजह से भी हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन लीवर की हो सकती है। तो हेपेटाइटिस दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, एक एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो स्मॉलर पीरियड के लिए रहे, क्रॉनिक जो 6 महीने से ज्यादा चलता है उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन वी आर डिफरेंशिएटिंग। इटियोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि वायरल इन्फेक्शंस हैं, अल्कोहल, अगर एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं तो उससे हेपेटाइटिस हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स सम, अगर किसी की बॉडी में एंटीबॉडी बन गई अगेंस्ट द लिवर सेल, तो वो लिवर सेल्स की डिस्ट्रक्शन शुरू करेंगी और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, तो इट्स कैन बी ऑटो इम्यून ऑल्सो। और कुछ ड्रग्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन लिवर की करती हैं, अगर आप प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं उनका, तो इट कुड रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। तो अब डिफरेंट टाइप्स के हेपेटाइटिस हैं, जो 5 तरह के हैं ऑन दी बेसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन। अल्कोहलिक लिवर डिजीज हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। जो हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो पर्टिकुलरली फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। मींस पर्टिकुलरली जब हम हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते तो हेपेटाइटिस ए एंड ई का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और पर्टिकुलरली जब हम मीन्स दूषित पानी और खाना वगैरह खाते हैं तो हेपेटाइटिस ई, ए एंड ई। एंड में सबसे ज्यादा केस हम देखते हैं इंडिया में मानसून रीजन में, रेनी सीजन में, जब हमारा ड्रिंकिंग वाटर्स अदर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो इट रिजल्ट्स इन हेपेटाइटिस एंड ए एंड ई। जो दूसरा है बी, सी, डी, तो बी, सी जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो ब्लड के थ्रू मदर को अगर हेपेटाइटिस बी है तो सन को हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो जाएगा, राइट? तो हेपेटाइटिस बी और सी ये ट्रांसफर हो सकते हैं क्रॉनिक कंडीशंस में, और क्रॉनिक कंडीशंस को ट्रीट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। ए एंड ई एक्यूट जो हेपेटाइटिस है ए एंड ई, वो विद इन टाइम आपके लीवर कवर अप कर लेता है उस इन्फ्लेमेशन को। बट जो हेपेटाइटिस बी का है तो उसमें आपको या तो तभी वैक्सीन की जरूरत है या तो आप उसमें मेडिसिन आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है हेपेटाइटिस बी के केसेस में। अगर हेपेटाइटिस बी हम अनट्रीटेड रखते हैं या क्रॉनिक हेपेटाइटिस चल रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाता है लीवर सिरोसिस में।
अगर फिर भी वो लीवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है, और आपके पास अगर लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर हो गया पेशेंट्स को, तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा हमारे पास कोई बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। तो ये हेपेटाइटिस बी का है। हेपेटाइटिस सी भी आपका ब्लड से ट्रांसमिट करता है, नीडल से, जो बार बार सेम नीडल आप सेम पेशेंट्स में या सेम उसमें यूज कर रहे हो, सलाइवा के थ्रू, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू, तो वो हेपेटाइटिस सी, एंड अगेन इट कन्वर्ट इनटू एक्यूट टू क्रॉनिक, राइट। सो हेपेटाइटिस डी आपका को इन्फेक्शन, जिसको हेपेटाइटिस बी होगा उसमें हेपेटाइटिस डी साथ में हो सकता है। तो हेपेटाइटिस डी जो है वो को इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी है। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी है साथ में डी है, तो उसके कन्वर्सन ज्यादा रहते हैं, वो जल्दी में कन्वर्ट हो जाएगा लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर में। अदरवाइज अगर पेशेंट्स हेपेटाइटिस बी का है तो उसको 10, 15, 20 साल लगेंगे कन्वर्ट होने में। लीवर सिरोसिस एकदम से डेवलप नहीं होगी, तो धीरे 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 करके डेवलप होगी। तो उसमें बट अगर पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी और साथ में डी है तो वो जल्दी कन्वर्ट होगा, तो उसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हेपेटाइटिस सी मैंने जैसे बताया वो सेम फीकोरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। पैथोजेनेसिस में आपका अगर आप पैथोजेनेसिस देखोगे तो सबसे पहले आपको समझना है, कोई भी वायरस बॉडी में जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी की मशीनरी को यूज करता है। तो वो जैसे आप इस फिगर में देखोगे कि पहले अटैच करेगा, फिर अनकोड करेगा मटेरियल को, फिर न्यूक्लियस पे एक्ट करेगा, फिर प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन अब वो क्या करेगा कि वायरस वाली प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, हमारे न्यूक्लियस को, हमारे होस्ट सेल के न्यूक्लियस को यूज करके अपनी प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा और नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाता जाएगा। ये कोई भी वायरस ऐसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू पैथोजेनेसिस अगर आप हेपेटाइटिस की देखोगे तो इन्फेक्शन जब वायरस का कोई भी होता है तो वो हमारे लीवर सेल्स को डैमेज करेगा। जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज बाहर से पहले आती है तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम उसको सेंस करता है, और इम्यून सेल्स के ऊपर सेंसर लगे होते हैं, जैसे आपके टॉल लाइक रिसेप्टर आ रहे सेंसर, नॉड लाइक रिसेप्टर्स आ रहे सेंसर। तो ये सेंस करते हैं, अगर इनको लगा कि यस ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर नहीं है, और पैथोजेंस के ऊपर एक डिफरेंट काइंड की प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं पीएएमपी, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो ये इसको सेंस करती हैं, और सेंस करने के बाद जो मैंने आपको बताया मैप काइनेज पाथवे, एनएफ कापा बी, ये फिर न्यूक्लियस पे एक्ट करके फिर वेरियस साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे। अच्छा, मैं क्लास क्लास करके आता हूँ, अभी तो है। तो उसमें फिर आपका हेपेटोसाइट, ये लीवर, जब हमारा इम्यून सेल्स और पर्टिकुलर वायरल के केसेस में इंटरफेरोन रिलीज होते हैं जो कि एंटीवायरल है, राइट। बट जब हमारा इम्यून सिस्टम हैंडल नहीं कर पाता, जब आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो आरईक्यू पेन होगा पेशेंट्स में, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, टेंडरनेस होगी, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। और जब हमारे हेपेटोसाइट्स डैमेज होते हैं, लाइसिस होती है, तब हमारे स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम्स का लेवल बढ़ जाता है। तो वो एंजाइम्स हम ALT AST, तो जब कोई ब्लड टेस्ट के लिए जाएगा अगर उसका ALT AST लेवल बढ़ा हुआ है तो मीन्स उसके लीवर सेल्स में इंजरी है, इट इंडिकेट्स इंजरी इन द लीवर सेल्स। तो ये विद इन टाइम आपकी अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है ठीक हो जाएगा, बट इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस ये परसिस्ट रहते हैं, ये वायरस अंदर सेल्स के अंदर तक चले जाते हैं और ये बहुत टाइम तक रहते हैं और ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करते हैं। और आपको पता है हमारे लीवर का बहुत सारे फंक्शंस हैं तो उस सबको अल्टर करते हैं, ग्लूकोनेजेनेसिस प्रोसेस को रिड्यूस कर देंगे, एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन कम होगी, क्लॉटिंग फैक्टर कम होंगे। तो अगर ग्लूकोज कम होगा तो एनर्जी बॉडी को कम मिलेगी, तो पेशेंट्स बोलेगा मुझे थकावट रहती है, फैटीग रहता है। एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो एल्ब्यूमिन के साथ हमारी बहुत सारी ड्रग्स बाइंड करती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होती हैं, उनका अल्टरेशन होगा। INR क्लॉटिंग फैक्टर हमारा लीवर बनाता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाएगा तो हमारा इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो बढ़ जाएगी। INR का लेवल बढ़ेगा तो मीन्स जो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग जो नॉर्मल टाइम है 10 से 13 सेकंड तक, तो वो ज्यादा टाइम लेगा। और पेशेंट्स अगर ज्यादा INR बढ़ रही है तो मीन्स पेशेंट इज ए रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये सारे फंक्शन अल्टर होंगे। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस में फिर अगर फर्दर एंसिलोपैथी, स्प्लीनोमेगली, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, इसोफेगल वेराइस हो जाएगा, एस्टाइट्स हो जाएगा। सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस, राइट। डायग्नोसिस मैंने आपको बताया था कि आप डायग्नोज कैसे करोगे पेशेंट्स तो आएगा कि मेरे को फीवर है, भूख नहीं लग रही है, थकावट रहती है,
उल्टी, नोजिया मीन्स उल्टी का मन करता है या उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होता है या जॉन्डिस के साथ आया, तो आप ये सारे सिम्टम जो हैं ये बहुत सारी डिजीज में ओवरलैप करते हैं। आप इन सिम्टम के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि आप हेपेटाइटिस है। तो हिस्ट्री ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल। अगर पेशेंट्स आता है कि मैंने कल बाहर खाना खाया, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई, मैंने बाहर पानी पिया तो उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो आपको सेंस होगा यस ये हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। अगर पेशेंट्स ने बोला कि मेरी मदर को हेपेटाइटिस बी है, उस हिस्ट्री में आपको पता चला ओके, या पेशेंट्स ने क्या किया, टैटू करवाया कहीं पे, तो आपको सेंस होगा। या जो पेशेंट्स हम जो इंडिया में जो रिकमेंडेशंस हैं कि अगर कोई आपकी फैमिली में या कोई भी मीन्स कोई किसी भी पर्सन की सर्जरी हुई 2000 से पहले, या उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ या ब्लड डोनेट किया, जो भी चीजें की, तो उसको एक बार हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवा लेना चाहिए, जस्ट फॉर ए प्रिकॉशनरी। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास उतने विग्रस हम लोग नहीं करते थे, नीडल्स मीन्स बार बार वो यूज कर लेते थे सर्जिकल प्रोसीजर में भी, बट उसके बाद से चीजें कंट्रोल हुई हैं, तो एक बार हेपेटाइटिस बी का करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाता है हेपेटाइटिस बी है, ए है, सी है, डी है या ई है। और प्रिवेंशन अगर आप पूछोगे वैक्सीन के बारे में, तो हेपेटाइटिस ए, बी और ई की हमारे पास वैक्सीन हैं। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बचपन में पूरी तरह रिकमेंड की जाती है कि हर नवजात शिशु को लगवानी चाहिए। ए हमारी उसमें हेल्थ प्रोग्राम में नहीं है, क्योंकि ए एक्यूट इन्फेक्शन करती है और कंटामिनेटेड और ये सबसे होती है, पर ऑप्शनल है, किसी को लगवा सकते हैं। और ई अभी आई है तो इसकी अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा है नहीं, तो बी की वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। बट फिर भी अगर किसी ने नहीं लगवाई ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, जैसे आजकल जो पेंडेमिक चला है, बहुत सारे अगर आप सर्वे करोगे देखोगे कि पता नहीं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई ही नहीं। अगर नहीं लगाई तो उसको अगर हेपेटाइटिस बी होता है तो हम कैसे मैनेज करेंगे, तो हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो हम इनको देते हैं पेशेंट्स को और ट्रीटमेंट के लिए। अगर मीन्स पेशेंट्स की सीरियस ज्यादा कंडीशंस खराब है, लीवर सिरोसिस हो चुका है, लीवर कैंसर हो चुका है, तो उस केस में फिर लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट का मैं आप लोगों को यही बोल रहा था कि किडनी तो आप सबको पता है कि दो है, तो एक किडनी दे दो, एक पे पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा। बट लीवर तो हमारे पास एक है, तो लीवर ट्रांसप्लांट कैसे कर दोगे? तो ऑफ कोर्स वी आर डूइंग, एंड देयर आर टू लोब्स इन द लीवर, एंड लीवर हमारा ऐसा ये है ऑर्गन है जो इसमें एक मीन्स सबसे डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है रीजनरेट करने का, तो वो फिर रीजनरेट हो जाता है। So this is about hepatitis. Now it's open for your queries. If you have any queries, please ask. Excuse me, sir. Yes, go ahead. Sir, how will we get recorded lectures? Recorded lectures, I will share with you. Okay, sir. I will share or I will upload in YouTube, so you all can see it, right? Okay, sir. Because maybe its size is big, so I don't know, through mail I will able to attach it. If not, I will upload in YouTube, so you all can see it. Okay. Any other query regarding hepatitis? Harshita has done some work on hepatitis, right? If I remember. So Harshita, Yes, do you sir. want to share your experience? Yes, sir. Actually, we had an awareness program for it. Okay. Yes, sir. A student from BSc Sports Science who is director of international services in our club, Mm-hmm. who headed this event for hepatitis. So what awareness you have provided? Sir, on social media, we had posters for it, like what treatments and symptoms we can. Hello. Okay. Okay. Go ahead. Hello. Okay, so means you have conducted camps, right? You are telling means to aware the peoples about hepatitis and what are its symptoms, right? Is it right, Harshita? I think Harshita is not able to listen. Okay. Okay. Anyone want to add something? Okay. So if there is no questions, just last 1 minute, if anyone want to add something or anything.
you can add if anyone has any query related to hepatitis. Okay. Okay, if there is no question, so thank you very much, students. Have a good day. Thank you. Thank you Thank you, very much. sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.